Dear students, good morning. Now we start the narration change continuous. Yesterday we discussed about the narration change and what are these examples. And we continue from this chapter. From this stage we discuss when and where in these sentences changes in direct speech from direct speech to indirect speech. We discussed about in previous class. These are four sentences: statement, questions, imperative and exclamatory, and statement sentences divided affirmative and negative, question sentences yes no types and WH types, imperative commands and request, and exclamatory sentence. In such types of sentences is changed in indirect speech. Now we discussed about in previous class quotation mark in direct speech, verb present simple and present perfect. Verb doesn't change. डायरेक्ट स्पीच रिपोर्टिंग भर्ब अर्थात कोटेशन मार्क बाहर थिबा भर्ब प्रेजेंट सिंपल बा प्रेजेंट परफेक्ट रे थिले कोटेशन मार्क भितर थिबा भर्ब बा टेंस रो कोनोसी परिवर्तन हुए नाही. आमे एग्जांपल रखिथिले ही सेज आई एम वेरी हैप्पी, ही सेज दैट ही इज वेरी हैप्पी. एडी आमर इज हे गेला बट नॉट चेंजेस ऑफ वर्ब्स, चेंजेस ऑफ ओनली फॉर सब्जेक्ट बा प्रोनाउन. से बेले भाबरे माने अनेक उदाहरण उपस्थापन करिथिले एवं डायरेक्ट स्पीच रे केउ केउ स्थल रे आमे परिवर्तन करिथिले इनडायरेक्ट स्पीच रे. आज मध्ये सबुठ आमे कंटिन्यूअस करिवा. द प्रेजेंट टेंस इन द डायरेक्ट स्पीच इज नॉट चेंज्ड इनटू द पास्ट टेंस इन द इनडायरेक्ट स्पीच इफ द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ और ए हैबिचुअल एक्शन. जदि कोनोसी वाक्यटी चिरंतन सत्य होता है ताले सेथिरे भर्बर कोनोसी परिवर्तन हुए नाही, केवल दैट कंजक्शन टी लागे. आमे देखिबा सच एग्जांपल्स. डायरेक्ट स्पीच राची ही सेड ऑनेस्टी इज द ट्रूथ पॉलिसी. ऑनेस्टी इज द ट्रूथ पॉलिसी, दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ. एकम इनडायरेक्ट स्पीच रे कले ही सेड दैट कंजक्शन लागला ऑनेस्टी इज द ट्रूथ बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. सेमती ही सेड गॉड इज एवरीवेयर, ही सेड दैट कंजक्शन लागला गॉड इज एवरीवेयर, कारण यह चिरंतन सत्य, यार कोनोसी अवास्तवता नहीं. ही सेड अर्थ मूव्स राउंड द सन, ही सेड दैट अर्थ मूव्स राउंड द सन. तेणु जहाँ थिला से हला चिरंतन सत्य यूनिवर्सल ट्रूथ बा हैबिचुअल एक्शन रे डायरेक्ट स्पीच रु इनडायरेक्ट स्पीच को कला बेले कौनसी परिवर्तन हुए नहीं, केवल दैट कंजक्शन टी लागे इनवाइटेड कमाटी उठी जाए. नेक्स्ट पॉइंट, मोडल्स सच एज कैन एंड मे आर चेंज्ड इनटू देयर रेस्पेक्टिव पास्ट फॉर्म्स. जो कैन थिबो एवं मे थिबो ठीक जते बेले हम इनडायरेक्ट स्पीच करबा सेही समय रे तार कैन न कुड हे जिवो मे र माइट हे जिवो. ही सेड आई कैन गो टू द पिक्चर, he said I may go to the picture. Indirect speech रे कले कोन हबो he said that he could go to the picture. एटी केवल प्रोनाउन चेंज हे गेला. he said that he might go to the picture. तेनु जेहेतु एटी ही अछि या आइटा कोन हे गेला ही हे गेला. कैन न पास्ट फॉर्म हे गेला, तार रेस्पेक्टिव पास्ट फॉर्म कैन न कुड मे र माइट. देन modals such as would, should, could, might, must, need, ought to, used to do not normally changed. ये माने चेंज हेबे नाही. ये माने पास्ट रहिले, ये माने सदा सर्वदा इनडायरेक्ट स्पीच रे पास्ट फॉर्म रे ही रहिबे. such as examples he said we would not surrender, he said that they would not surrender. एठी ही थिबारु एठी we टा चेंज हे गेला कोथरे दे रे चेंज हे गेला. He said we would not surrender, he said that they would not surrender. एटी we रा दे हे गेला इनडायरेक्ट स्पीच रे. सेमती ही सेड
Lara might win the match. He said that Lara might win the match. ତେଣୁ would ଯଦି ଥିବ might ଯଦି ଥିବ used to need ought to ଏମାନଙ୍କର ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ ରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ. ଓନ୍ଲି ଫର୍ କ୍ୟାନ୍ ଏବଂ କୁଡ୍ ଯଦି ମେ କ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ମେ ଯଦି ଥାଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ ରେ ଆମେ ତାକୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହେଲେ କ୍ୟାନ୍ କୁଡ୍ ହବ ମେ ର ମାଇଟ୍ ହବ. କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ପାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ଗୁଡା ଯଦି ଥାଏ କ୍ୟାନ୍ କୁଡ୍ ସାଲ୍ ସୁଡ୍ ୱିଲ୍ ଉଡ୍ ମେ ମାଇଟ୍ ଅଟ୍ ଟୁ ଇତ୍ୟାଦି ମାଇଟ୍ ଅଟ୍ ଟୁ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଯଦି ଥାଏ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ ରେ ହୁଏ ନାହିଁ. ଦେନ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ another example, Ramo said we should obey the rules of the road. Indirect speech rehla Ramo said that we should obey the rules of the road. Then other examples, Ramo he said Gopal need not see him again. He said that Gopal need not see him again. He said they ought to behave. He said that they ought to behave. देखंतु ought to ର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ନାହିଁ, need ର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ନାହିଁ, ସେପଟେ should would ର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନାହିଁ କାରଣ ସେମାନେ ନିଜେ ହିଁ ଆପେ past form ରେ ଅଛନ୍ତି. Next note, pronoun changes are necessary and these must be logical. It depends on the person who speaks, the person who reports, and the person to whom the speech is reported. এই জায়গায় কোন হুয়ে প্রোনাউন ন পরিবর্তন হয়ে যায়. আইতিলে হি হব, দো বয়েজ তিলে দে হব. তেণু আমি দেখিবা এক্সাম্পল সে কোন কোন প্রোনাউন গুড়া সব চেঞ্জ হଉଛି. Pronoun changes are necessary and these must be logical. It depends on the person who speaks. किए कहे किए कहूची, the person who reports किए रिपोर्ट करिची, and the person to whom the speech is reported. Example देखो दो, he said to me, से मते कहिले I will give you a chance. मु तुमको गोटिए सुजोग देबी. एडी said टा कोउतरे परिवर्तन हेला, he told me that. आउ टू टा एटी उठी गला जो प्रीपोजिशन थिला इनडायरेक्ट स्पीच रे ओमिट हे गला. he told me that said रो told हे गला. एई बळी सेंटेंस रे प्रोनाउन जतबे परिवर्तन होई इनडायरेक्ट स्पीच रे he told me that I रटी ही हे गला बिकॉज़ एटी ही अछि. he would will रा कय गला would हे गला. he would give me एटी you थिला you रो me हे गला. ये चांस देखो तो केते प्रकार चेंज हला. he said रटी told हेला, एटी प्रीपोजिशन ओमिट हे गला. he told me that कंजक्शन लागिला. I रो हेला he, will रो हेला would, एटी you रो हेला me. काई गेला ना देखंतु एठी रिपोर्टिंग वर्ब रे कोन अछि, he said to me. से मते कहिला जे मु तुमको गोटे सुजोग देबी. मु एई कथाटा को अन्य पाखर नै कि परोक्ष उक्ति रे प्रकाश करबी. से मते कहिले जे से मते गोटे सुजोग देबे. तेनु यूटा मी हे गेला, will टा would हे गेला, I टा he हे गेला. ऑटोमेटिक चेंज हैला. he said to him. आमे अर्थ को देखिबा लॉजिकल लॉजिक सेंटेंस रो लॉजिक टा कोन कहूची. से मते कहिला एटी मी थिबारु एटी यूटा मी हे गेला. एटी ही थिबारु एटी आई टा ही हे गेला. आमे जानि चंती विल रो वुड हुए पूर्व क्लास रे हम पढिथिले. साल रो शुड हुए जेतबे हम इनडायरेक्ट स्पीच को परिवर्तन करिबा. जदि वुड थिबा कोनोसी परिवर्तन हबो नाही. देन नेक्स्ट एग्जांपल, he said to him. एटी मी थिला एटी हिम हे गेला. he said to him I will give you a book. He told him. एटी थिला he told me. एटी हे गेला he told him. that conjunction लग गला. I रो he हे गेला because एटी अछि he will रो would हे गेला. give एटी you रो हे गेला him because एटी अछि him. रिपोर्टिंग वर्ब रे कोन अछि, him अछि. तेणु एई भली कि लक्ष्य करके परिवर्तन करिवे. द सेंटेंस व्हाट वांट्स वाक्य कोन चाहुची आमे ताको देखिबा, तार लॉजिक टाको आमे अनुभव करिबा. देन नेक्स्ट, he said to Monica. he said to Monica I will help you. देखो केवल प्रोनाउन न परिवर्तन होउची सेंटेंस रे. प्रोनाउन केमिति आई रो यू रो हिम होउची. हिम एटी काई केला रिपोर्टिंग वर्ब रे हिम अछि. एटी मी रो एटी मी हेला. एटी रिपोर्टिंग वर्ब रे मी थिला. एटी देखंतु he said to Monica
I will help you. He assured to Monica. This is the logic. He assured to Monica. मोनिका कहला जे मु तुमको साहाय्य करिवि. से assured अर्थात निश्चित कला. assured निश्चित तक कला. कौन कला? मु तुमको निश्चित साहाय्य करिवि. He said to Monica. He assured to Monica that conjunction. एटी आई रही है गला. He will would है गला. Help her. एटी यू थिला. यूटा कहा पाई थिला? मोनिका पाई थिला. तेणु से मोनिका को कहिला जे मु तुमको साहाय्य करिवि. आमे ताको इनडायरेक्ट स्पीच रे मु अन्य छाड़ जे प्रकाश करिवि जे से एश्योर देला 100% निश्चित कला प्रोमिस कला. ही एश्योर्ड टू मोनिका दैट ही वुड हेल्प हर. एटी हरटा लागिछि मोनिका पाई. बुझिला तो? एटी हरटा को पाई लागिछि? मोनिका पाई लागिछि. मोनिका बदल रे आमे मोनिका हरटा गोटे प्रोनाउन. एटी प्रोनाउनटा मोनिका पाई लागला. एटी यू पाई कौन है हेल्प हर. एटी यू थिला मोनिका. बुझिला नहीं? ही सेड टू मोनिका आई विल हेल्प यू. ही एश्योर्ड टू मोनिका दैट ही वुड हेल्प हर. से ताको साहाय्य करिवो. पुणी आउ गोटे देखंतु. आई सेड टू द बॉयज द जेंटलमैन विल मस्ट यू अगेन मीट यू अगेन. आई सेड टू द बॉयज द जेंटलमैन विल मीट यू अगेन. एंडर स्पीच रे कहला आई टोल्ड द बॉयज दैट द जेंटलमैन वुड मीट देम अगेन. एटी बॉयज पाई देम हे गला प्रोनाउनटा. एटी प्रोनाउन चेंज हला. प्रोनाउन चेंजेस आर नेसेसरी and this must be logical. It depends on the person who speaks, the person who reports, and the person to whom the speech is reported. किए कहा को कहूची कोठी फेमिनाइन अछि आमे ताको फेमिनाइन ने करबा. कोठी मास्कुलाइन अछि आमे ताको मास्कुलाइन ने प्रोनाउन को बसैबा.